Hello children, how are you? I hope you all are doing well. So children, like we were talking about nature in our previous chapters or in our previous classes, we are going to again focus on plants in this chapter and see more about them and study more about them. Alright, so this chapter's name is plants. I know carrot is a dash of a plant. The dash is the national flower of Bharat. Now, आप बताओ मुझे carrot क्या है? Where is it grown in a flower? When you know, where is it grown? Okay, and which part of the carrot do you eat? You have to talk about it, and you have to also name the national flower of Bharat. I hope you know it all. Alright, so first, carrot is the root, and the lotus is the national flower of Bharat. Okay, so children, our body has different parts that perform different functions. Just like our body, okay, same like us, plants also have different parts to perform different functions. The main parts of plants are roots, stem, branches, leaves, flowers and fruits. Now, चलो, जैसे हमारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हैंड्स, लेग्स, आईज, ओके, हेड, सो वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. लाइक दे हैव रूट्स, दे हैव स्टेम, दे हैव ब्रांचेस, दे हैव लीव्स, दे हैव फ्लावर्स एंड दे हैव फ्रूट्स. चलो, अब एक एक पार्ट को देखते हैं डिटेल में. द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. The plant body consists of two basic parts, root system and the shoot system. तो अगर आप देखोगे प्लांट की बॉडी को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, दो हिस्सों में. एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है शूट सिस्टम. रूट सिस्टम मतलब जो सिस्टम हमें दिखाई नहीं देता, अंडर द ग्राउंड जो होता है, दैट इज द रूट सिस्टम, एंड शूट इज व्हाट वी कैन सी विच इज अबाउट द ग्राउंड. Okay, now let's look at the root system first. The part of a plant that grows below the ground is called root. Roots hold the plants firmly to the soil. They absorb water, minerals and nutrients from the soil. Plants have two types of roots, taproot and fibrous root. Okay, so बच्चों root system में क्या होता है? क्या होते हैं roots? They are the plant that they are the part of the plant जो ग्राउंड के नीचे होता है. ओके, और ये जो होता है वो प्लांट को फर्मली अंदर ग्रिप कर लेता है. ओके, होल्ड करता है इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर, और यही से पानी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ओके, दे एब्सॉर्ब एंड दे हेल्प द प्लांट टू ग्रो. अब जो रूट्स होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं. एक होता है टैप रूट होता है एंड सेकेंड इज द फाइब्रस रूट. ओके, टैप रूट क्या होता है? इट इज अ थिक सिंगल रूट विच ग्रोज स्ट्रेट डीप इनटू द सॉइल. इट मे और मे नॉट हैव ब्रांच रूट्स. स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ टैप रूट. These branches are called lateral and side roots. Mustard, carrot, pea, etc. They have tap roots. So ये roots आप देखोगे, जैसे जो tap root होता है वो thick होता है और single होता है और वो straight नीचे soil में grow कर देता है. Okay? और अभी इसमें और roots के branches होंगे या नहीं होंगे. Okay? आप अगर प्लांट का जो नीचे वाला हिस्सा आपने कभी देखा होगा तो उसमें होते हैं बहुत सारे रूट्स, और एक होते हैं बहुत सारे रूट्स और एक होता है सिंगल रूट. ओके, सो स्मॉल हेयर लाइक रूट्स ग्रो फ्रॉम द साइड्स ऑफ अ टैप रूट. ये टैप रूट के साइड में छोटे छोटे हेयर लाइक रूट्स ग्रो. लुक एट दिस डायग्राम, इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर ईजियर. जैसे ये कैरेट है, कैरेट के साइड में छोटे छोटे रूट्स ग्रो हुए. सो दीज ब्रांचेस दे आर कॉल्ड लैटरल एंड साइड रूट्स. ओके, नाउ दूसरे होते हैं फाइब्रस रूट्स. अब फाइब्रस रूट हैज मेनी ब्रांचेस. देखो नीचे ही बहुत सारे ब्रांचेस है विच ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. It has many branches that spread out sideways. It does not go very deep into the soil.
All types of grasses have fibrous roots. Rice and wheat also have fibrous roots. Clear? चलो अब देखते हैं रूट का फंक्शन क्या है. The root of a plant performs many important functions. जैसे the root holds the plant firmly to the ground. This prevents the plant from being pulled away or pulled out easily or blown away by the wind. So, because it is so tight inside the ground, it is so firmly settled inside the ground, जिसकी वजह से हवा जब तेज हवा आ जाती है तो ये plants जो है वो उड़ नहीं पाएंगे. Okay? Next, roots possess small hairy structures called root hairs, which absorb water, minerals and nutrients from the soil. Then we need the topsoil, the most fertile part of the soil for growing healthy crops and trees. Roots bind the soil particles together and prevent soil erosion. Soil erosion is the removal of the topsoil due to the force of wind or water. अब जो roots होते हैं अगर उसमें जो small hairy structures होते हैं उसको बोलते हैं root hair. अब इसी में से जो plant होता है उसको मिलते हैं water, minerals and nutrients from the soil, मिट्टी में से. Okay? Now, जो टॉप सॉइल होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है सॉइल का, वो सबसे फर्टाइल होता है. ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट पोर्शन जो क्रॉप्स को या ट्रीज को ग्रो करने में हेल्प करता है. अब रूट जो होता है वो सॉइल पार्टिकल्स को बाइंड कर देता है टुगेदर. ओके, और इसकी वजह से जो बहुत सारी हवा चलती है या फ्लड्स आते हैं, ओके, तो उसकी वजह से ये जो ट्री होता है या प्लांट होता है वो वहाँ से हटे ना. ओके, इट शुड स्टिल स्टे फर्म. इसके लिए इट इज़ placed over there in such a manner. Okay, that is how the topsoil is very important. Okay, it joins it together, it holds the plant firmly together. Okay, soil erosion is the removal of the topsoil due to the force of wind and water. Okay, तो जब बहुत सारी बारिश होती है तो आपने देखा होगा फ्लड्स के वक्त there are certain plants which flow away in the water. Okay, that is because of the loosening of the topsoil. जब topsoil लूज हो जाता है वो plants uproot हो जाते हैं और वो बहना शुरू हो जाते हैं. Okay, but otherwise this is actually very, आप देखोगे सारे plants नहीं जाते. So जो delicate वाले होते, जो tightly firmly नहीं बैठे हैं ज़मीन के अंदर, वो जाते हैं. Okay, roots of some plants such as carrot, radish, beetroot and sweet potato store water in them. Such roots are called storage roots. We eat these roots. Okay, हम लोग तो carrots, radish, beetroot, sweet potato काफ़ी खाते हैं. Okay, अब इनके अंदर ही आपने देखा होगा बाइट लेते हैं, कभी कभी जूसी होते हैं. So that is because of the water in them. Okay, now roots of some plants provide additional support. For example, a banyan tree has many rope-like growths hang down from its bigger branches. These hanging growths are called special roots. They act like pillars and support the heavier branches of the tree. आपने banyan tree देखा होगा. अब banyan tree में आप देखोगे कि इनके बाहर की तरफ भी ये roots grow हो जाते हैं जो उसके branches को support देते हैं. Alright? Now, let's talk about some special types of roots. जैसे water storage roots. Roots of some plants like asparagus and pumpkin, they store water so that plants survive for long during summer months. Okay? Propagative roots. Propagative roots क्या होते हैं? Some plants can multiply with the help of their roots. कोई जो plants होते हैं वो roots की वजह से multiply करते हैं और बढ़ जाते हैं. Okay? Such roots have buds close to the surface of the ground. As these plants propagate मतलब multiply होना, with the help of their roots, they are called propagative roots. Because इनकी जो growth होती है, ये जो buds होते हैं वो roots में ही होते हैं. इनकी वजह से ये multiply होते हैं और वो और बढ़ जाते हैं. Okay? Now let's talk about aerial roots. You must have seen aerial roots of a banyan tree. Okay? As the banyan tree lives for a long time, it needs new root to prop it up and absorb moisture.
Such roots start growing from the branches reaching the ground. So जैसे जैसे banyan tree बड़ा होते जाता है, उसको जो मॉइस्चर की ज़रूरत होती है वो बढ़ जाती है. इसके लिए उसके रूट्स अपने आप फॉर्म होते हैं, बट फ्रॉम द अपर पोर्शन ऑफ द ट्री. नीचे से तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ वो ऊपर से भी बढ़ना शुरू हो जाता है. ओके, नाउ these branches then absorb the moisture from the air. Okay, now what are buttress roots? These are large roots growing on all sides of a tall tree. They are found in rainforests where soil is poor, so roots do not go deep inside. They prevent the trees from falling and help them to take more nutrients. Okay, so जो ये रेन फॉरेस्ट होते हैं, रेन फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? Where there is a lot of rain. Okay, that area where there are lots of trees grown, वो कहलाते हैं रेन फॉरेस्ट एरियाज. अब यहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, तो इसकी वजह से the roots are not so firm. Okay, इसीलिए they have roots which are grown on the sides of the tree. और जहाँ से उनको ट्री को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एंड ग्रिप मिलती है. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द शूट सिस्टम. द शूट सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रोज अबाव द ग्राउंड. इट कंसिस्ट ऑफ द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. तो रूट सिस्टम अंडरग्राउंड हो गई, शूट सिस्टम ओवर द ग्राउंड. ओके, स्टेम. Stems help to transport water, minerals and food to different parts of a plant. They keep plants erect and bear leaves, flowers and fruits. They also carry prepared food from the leaves to other parts of the plant. The stem of a tree is known as trunk, which is covered by bark. Okay, तो stem क्या होते हैं? Stem में से जो प्लांट होता है, प्लांट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है उसको मिलता है वाटर, मिनरल्स एंड फूड. दैट इज ऑल ट्रांसपोर्टेड इन द डिफरेंट पार्ट्स थ्रू द स्टेम. ओके, स्टेम also helps the plant to stay erect. Okay, and it can also bear leaves, flowers and fruits. Okay, now they also carry prepared food from the leaves to other parts of the plant. Okay, food कहाँ बनता है? Leaves पे. Okay, now the stem of a tree is also known as the trunk. और trunk को बाहर से cover क्या करता है? The covering of the trunk is called a bark. Okay, we eat the stem of some plants that store food in them. These stems are called underground modified stems, such as potato, ginger, colocasia, sugarcane and onion. Alright, now let's look at leaves. What are leaves? They are thin, flat and green part of a plant that is attached to the branch. Leaves prepare food for the plant. Leaves को क्या बोलते हैं? Food factory of a plant. Okay, remember that. Leaves use carbon dioxide and water to make food for the plant in the presence of chlorophyll and sunlight. Chlorophyll की वजह से क्या मिलता है प्लांट को? They get their green color. Okay, now this process is called photosynthesis. The process of making food in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. Okay, और इसमें what do they use? They use carbon dioxide and water. Okay, now the leaves of some plants such as spinach, lettuce and cabbage, they have food stored in them. We eat them as vegetables. We also use leaves of some plants such as the neem and eucalyptus for medicinal purposes. Okay, now let's look at flowers. So बच्चों, leaves are also very important because we use them as vegetables also, to eat also and also for medicinal purposes. अब देखते हैं flowers. Flowers क्या होते हैं? They are the colorful and beautiful parts of the plant. Flowers vary in size, shape, color and fragrance. आप देखोगे हर फ्लावर अलग होता है. रोज देखो, लिली देखो, ओके, उनके शेप्स अलग होते हैं, साइजेस अलग होते हैं, उनकी खुशबू अलग होती है. राइट, नाउ flowers contain a yellow, grainy and powder like thing called pollen.
ओके द फ्लावर्स, आप अगर फ्लावर्स देखोगे उस पर एक येलो सा चीज़ बना हुआ होता है. ओके व्हाट आर दोज आर ग्रेनी एंड पाउडर लाइक थिंग्स एंड दे आर कॉल्ड पोलन्स. ओके नाउ द पोलन स्टिक्स to the bodies of butterflies, moths, wasps, bees and birds which visit flower to suck nectar. As they move from one flower to another, pollen gets transported. Water and wind also carry pollen from one place to another. और ये pollens की वजह से ही these plants multiply. Okay, now let's talk about special about me. Now let's talk about the basic part of a flower. Okay, petals. Petals क्या होते हैं? They are bright in color and sometimes have a sweet smell. Okay, तो जो फ्लावर के जो पत्ते होते हैं ना, द फ्लावर दे आर कॉल्ड पेटल्स. ओके सेपल्स, दे आर द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स एट द बेस ऑफ अ फ्लावर. जो फ्लावर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है लीफ लाइक, ओके दे आर कॉल्ड सेपल्स. दे हेल्प टू प्रोटेक्ट द डेवलपिंग बड. Stamens. The stamen is the male part of a flower. Its job is to make pollen that is needed to make a new plant. It consists of two parts, anther and filament. While the filament holds the anther up, the anther produces pollen. Okay. Next is the pistil. Okay. Pistil क्या होता है? It is the female part of a flower. It consists of three parts, the stigma, style and the ovary. Okay, the stigma is the sticky knob at the top of the pistil. तो आप अगर ये डायग्राम देखोगे तो इसमें आप देखोगे कि जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है pistil. Okay, it is attached to a long tube like structure. It is called, a long tube like structure is called what? It's called style. Okay, now the style leads to the ovary. Okay, the ovary contains tiny eggs which are called ovules. Okay, when the pollen grains reach the stigma, जो pollen grains जो होते हैं जब वो stigma तक पहुँचते तो yellow part, the yellow grainy part, okay, it reaches the stigma, the reproductive process begins in the flower. The pollen grains help in the formation of seeds. Okay, वहाँ से seeds बन जाते हैं. Reproduction में seeds बन जाते हैं. Okay, और बाद में ये seeds से बन जाते हैं नए buds and then they turn into what? Into new plants. Okay, now this transfer of pollen grains from one flower to another is called pollination. तो जब pollen grains through the help of these different sources like wind हो गया, water हो गया, birds, butterflies, moths, bees and all, when these pollens from one plant move on to another one, so that process is called pollination. Okay, now let's look at flowering and non-flowering plants. सारे plants में आप देखोगे flowers नहीं आते. Okay, so there is a difference between flowering and non-flowering plants. So there are two types of plants, okay, flowering and non-flowering plants. Those plants which bear flowers are called flowering plants. Tuberose, rose, bougainvillea, lotus, marigold and tulip are some examples. Some plants such as ferns, moss and some cactus do not bear flowers. They are called non-flowering plants. Some plants have flowers only in some season, such as rose and dahlias, while some plants like bougainvilleas have flowers round the year. Okay, now find out which flowers bloom all the year round, which flowers bloom only in certain months. Are there any trees or plants which never have any flowers? तो आपको ये information find out करनी है. अलग-अलग type के flowers जो है, okay, go to the garden, find out the different types of flowers and different types of plants जहाँ पे आप देख रहे हो कि उन plants में से flowers आ रहे और उन plants में से flowers नहीं आ रहे. Okay, you can also visit a nursery. Okay, plant nursery visit करो, वहाँ पे आपको सारे तरह के plants दिखेंगे and you can talk to the gardener there, वो आपको सारी information दे देगा. Okay, seasonal flowers के बारे में भी वो आपको पूरी information देगा. Okay, now let's look at the pictures of different types of flowers. Lotus, bougainvillea,
fern and moss. Now these are the plants. देखो lotus and bougainvillea जो है वो क्या है, flowering, and fern and moss जो है they are non-flowering plants. Okay, चलो अब देखते हैं different uses of flowers. Flowers are useful in various ways. Flowers are used for decoration on different occasions such as marriage ceremonies, pujas, festivals and birthday parties. Some flowers have strong and sweet fragrance, hence they are used in making perfumes. Saffron is the pistil of the saffron flower. Okay, जो pistil हमने देखा था parts of the plant में आपको दिखाई देगा. Okay, जो उसमें होता है saffron. अब ये आपको पता है बच्चों, saffron जो है ना वो सबसे महंगी चीज़ होती है. केशर बोलते हैं उसको हिंदी में, और सबसे महंगी होती है. And these pistils, okay, जहाँ पे ये saffron flower grow होता है, जिसके अंदर ये बहुत ही they are like thread, small red threads. Okay, अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप अपने मम्मी को पूछो किचन में से आपको केशर का थ्रेड दिखाने के लिए, saffron दिखाने के लिए. Okay, now saffron is a lily like flower cultivated in many areas of Jammu and Kashmir for its केशर or pistil. Okay, it is used to flavor many exotic dishes like biryani. Okay, some flowers are used in medicines such as rose, jasmine, chrysanthemum and chamomile. They are used in making herbal tea. Okay, colors are made from many flowers such as marigold, tesu, hibiscus, etc. Colorful patterns are made on the ground on special occasions using different colored petals. This is called पूकलम. Okay, so बच्चे जैसे हम रंगोली बनाते हैं, okay, वैसे ही आप अगर देखोगे generally in south and all these states वो बनाते फूलों से रंगोली. Okay, this is called पूकलम. Okay, now पू मतलब it is पू मतलब flower. Okay, in south language and all they call पू. Okay, पूकलम is like a rangoli made of flowers. Okay, now flowers such as cauliflowers, broccoli, etc. they are used as vegetables. बच्चों उसके साथ साथ जब आप अपने टीचर्स को टीचर्स डे पे फ्लावर्स देते हो, या फिर आप देखते होगे कि कोई स्पेशल ओकेजन है, आपके घर पे कोई बुके दे रहा है आपके पेरेंट्स को, या आपको बुके मिलता है, तो आपको कैसे लगता है, अच्छा लगता है ना. सो दीज फ्लावर्स दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, isn't it? चलो अब do it yourself. Are there any special flowers used on certain occasions or festivals by your elders? Make a list of different occasions and the flowers used in them. जैसे आप सोचो वैलेंटाइंस डे है तो कौन सा फ्लावर मिलते हैं जनरली, इट्स अ रेड रोज. ओके, अगर जैसे फ्रेंडशिप डे है तो येलो रोज इज यूज्ड. ओके, जैसे अगर किसी के साथ दुश्मनी है और पीस कर लिया, ओके, झगड़ा मिटा दिया, सो वाइट रोज इज यूज्ड. ओके, सो डिफरेंट फ्लावर्स आर यूज्ड एंड दे सिंबलाइज डिफरेंट थिंग्स ऑल्सो. ओके, नाउ दीज सिंबल्स एंड दीज डिस्क्रिप्शंस आर मेड बाय पीपल देमसेल्व्स. नाउ लेट्स लुक एट अ फ्लोरिस्ट. अब ये फ्लावर्स हमें कहाँ से लेने चाहिए? We have to buy these flowers from whom? From a florist. Okay, now florists are people who sell flowers to earn money. The florist makes beautiful bouquets and flower baskets to sell. Flowers like rose, jasmine, orchids, chrysanthemum, etc. They are grown in farms by gardeners for sale. The cultivation of flowers for sale in the market is called horticulture. Alright, so now let's look at this, the way, how can we take care of these trees around us? We must take care of trees and stop cutting them. That's the most important thing. Okay, they are very useful to us. हमने देखा है trees, flowers, everything is so useful to us. The plants, they are different parts are used by every human being. So trees, they play a very vital, very important role in our life. Alright, now cutting down trees will lead to serious problems like pollution, drought and flooding. It will be impossible for us to survive without trees. Many parts of the forest are being cleared of trees in order to build houses and roads. This is known as deforestation. जब trees को cut down करते हैं
to make roads and to make houses and everything, तो उसको कहते हैं, that process is called deforestation. Okay, now we should not allow such things to happen around us and try to save the trees. Okay, अगर आप अपने एरियाज़ में देख रहे हो कि ट्री कटिंग हो रही है तो आपको जाके रोकना चाहिए लोगों को, या फिर यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स टू go and talk to them. All right, now there is a program, special program which is called Van Mahotsav. इस प्रोग्राम में क्या होता है, स्पेशली इस प्रोग्राम में होता है ट्री प्लांटेशन ड्राइव. ओके, trees are planted in large numbers on this day. This program is also held in schools. Students plant saplings. Lectures on the importance of trees are also given on this day. The government is also aware of the importance of tree. It plants trees on the roadsides. The forest department of the government of Bharat plant trees and protect forests. It prevents cutting of trees without prior permission. We should take care of plants. True children, it is very important. आप देखते होंगे government is also planting a lot of trees. Okay, और इन trees को भी proper पानी मिल रहा है, उनको खाद मिलती है, because these are the people. Okay, government employs people who can take care of these plants and who can also water them. All right, so children, do take a good care of all the plants, okay, that are around you. Do not pluck flowers. You can buy them from the florist, and do gift someone a flower. Okay, it brings a very special feeling in them. All right, now remember, the plant body consists of two basic parts, the root stem and the shoot stem. Plants have two types of roots, the taproot and the fibrous root. Stems have to help to transport water, minerals and food to different parts of a plant. Leaves prepare food for the plant. And there are two types of plants, which are flowering plants and non-flowering plants. Okay, now let's look at the word bank and the new words that we've learnt in this chapter. Firmly. Firmly means strongly and tightly. Florist is the person who sells flowers. And deforestation means cutting down of trees on large scale. और deforestation का opposite होता है afforestation, मतलब to plant more trees and saplings. Alright, so children, I hope now you know the importance of plants. और आप जब भी मौका मिलेगा नर्सरी विजिट करो, फ्लोरिस्ट को विजिट करो, अलग अलग प्लांट्स देखो, फ्लावर्स देखो, and study more about them. And now, for now, reread this chapter and do the back exercises.